-15, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Liftoff normal. There's the textbook liftoff of PSLV-C54 EOS-06 mission. सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV-C54 बहुत ही रोमांचक क्षण यह होता है। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं इसे लाइव देख रहे हैं, महसूस कर सकते हैं इनकी गर्जना, कंपन। Airlift strap ignited. S-130 के साथ बूस्टर शुरू हो चुका है और यह गर्जन करता हुआ आकाश में बहुत ही रोमांचक क्षण PSLV-C54 मिशन अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए रवाना हो चुका है। Burn time of the cumulative thrust being developed at this point in time is 9,008 kilonewtons. Ground lead strap ignited. There is the confirmation of the ground lead strap-on separation. Next flight event will be the separation of airlift strap-ons. सेपरेट कर दिया गया है। The spaceport and telemetry are getting information. Stage separated. Stage in short. प्रथम चरण पृथक कर दिया गया है सामान्य निष्पादन के बाद और चरण का हो चुका है। Performance normal. First stage having completed its operation has been separated. The second stage PS2 has been ignited against its operation and it's developing nominal thrust 2.8 meters in length and 12.8 meters in length and 0.8 meters in diameter. PS2 stage develops 803 kilonewtons of thrust by thrust to propellant combination. So we have information initiated. of flight events in quick succession as the rocket has crossed the atmosphere. Payload fairing has been completed and closed guidance initiated. कवच को उपयोग किया जा चुका है। अब अनक्लोज लूप गाइडेंस की तैयारी है। निर्धारण सेंसर्स की मदद से करता हुआ अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। Second stage performance normal. द्वितीय चरण के सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए The PS2 stage is a pump-fed stage and has Vikas engine which has proved its reliability in every mission. Vikas engine operates on hypergolic combination of UH-25 as fuel and N2O4 as oxidizer. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें लगभग 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 152 सेकंड्स का होगा। The burn duration of PS2 for the present mission is 152 seconds. द्वितीय चरण के पश्चात यान की कुल ऊंचाई 116 किलोमीटर के करीब तथा वेग 2.1 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा। Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण HPS-3 चरण प्रज्वलित हो चुका है। The third stage HPS-3 has commenced its operation. Third stage performance normal.
It is a solid propellant stage that has 7.65 tons of HTPB based propellant. HPS-3 develops a maximum vacuum thrust of 239.6 kilonewtons. Plus 5 minutes. यान पूर्णतः पूर्व नियोजित तरीके से अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ। For the present mission, HPS-3 stage has a burn duration of 121 seconds. तृतीय चरण HPS-3 फिर से ठोस नोदक पर आधारित चरण है। इसमें कुल 7.6 टन का प्रणोद होता है तथा यह 240 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। SHAR intervention ground stations are presently tracking. Third stage performance normal. तृतीय चरण करीब 121 सेकंड तक जलकर बंद हो जाएगा और उसके पश्चात करीब 100 सेकंड तक कोस्ट फेज जारी रहेगा। Plus 6 minutes. पूरे तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए We are 6 minutes 15 seconds into the launch. Third stage operation currently in progress. Third stage action completed. तृतीय चरण सामान्य निष्पादन करते हुए अपना प्रज्वलन काल समाप्त कर चुका है। वर्तमान में सापेक्ष गति 6 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 438 किलोमीटर। Now, though we have the confirmation of the completion of Vehicle HPS-3 performance burn, normal. the launch vehicle is in the regime of combined coast, meaning thereby that there is no thrust Plus being 7 developed. minutes. However, the rocket is being controlled through the two clusters of 50 Newton thrusters that are mounted on the outer diameter of the propulsion bearing. These thrusters give propellant from the PS4 stage. The coast phase for present mission lasts for about 105 seconds. कोस्ट फेज जारी है जिसमें पूरा यान पूर्व निर्धारित तरीके से दिशा निर्धारण करते हुए कक्षा की ओर अग्रसर है। कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा और उसके पश्चात चतुर्थ चरण का प्रज्वलन होगा। Plus 8 minutes. Third stage separated. तृतीय चरण सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। Fourth stage engine started. Now we have the confirmation of the separation of the third stage and the ignition commencement of the fourth stage. Pressure-fed twin engines that burn monomethyl hydrazine as fuel and mixed oxides of nitrogen Fourth as stage oxide performance oxidizer. normal. चतुर्थ चरण का प्रज्वलन सामान्य। चतुर्थ चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें मोनोमिथाइल हाइड्रोजीन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के मिश्रण को 9 minutes. ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसमें कुल 2.5 टन का ईंधन होता है जो कि दाब भारित इंजन द्वारा 7.33 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। इसमें ऐसे दो इंजन लगे होते हैं। इस समय सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए Burn duration of PS4 for this mission is 487 seconds. It has 2.5 tons of propellant loading and develops a maximum vacuum thrust of 7.33 kilonewtons by each engine.
इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 487 सेकंड के करीब है, यानी कुछ 8 मिनट निर्धारित है। plus 10 minutes. इस प्रज्वलन काल के अंत तक उपग्रह के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त की जा सकेंगी और PS4 को बंद कर दिया जाएगा। 4 stage performance normal. Meanwhile, let me tell the viewers about the satellites taking ride in this mission. First of all, the primary satellite EOS-06, which is a third generation satellite in the Oceansat series. This is to provide continuity services of Oceansat 2 spacecraft. It has among its payloads Ocean Color Monitor OCM3, Sea Surface Temperature Monitor SSTM, KU band scatterometer SCAT3 and Argos. It has a mission objectives to ensure the data continuity of ocean color and wind vector data to sustain the operational Plus 7 applications. To improve the applications, some additional data sets such as sea surface temperature and more number of bands in the optical region of Florence and in infrared region of atmospheric corrections are accommodated. To develop improved related algorithms and data products to serve in well-established application areas and to enhance the mission utility. चतुर्थ चरण का निष्पादन सामान्य है। यान अपेक्षित पथ को अनुसरण करता हुआ जा रहा है। आइए तब तक इस यान के मुख्य उपग्रह EOS-06 के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। EOS-06 ओशनसैट श्रेणी का तृतीय पीढ़ी का उपग्रह है। इसका मुख्य 4 उद्देश्य stage performance normal. ओशनसैट 2 की जारी सेवाओं को आगे बढ़ाते हुए उन्नत पेलोड की मदद से वृहद अनुप्रयोग सेवाएं प्रदान करना है। EOS-06 में मुख्य नेतभार के रूप में ओशन कलर मॉनिटर, सी सरफेस टेम्परेचर मॉनिटर, KU बैंड स्कैटरोमीटर और अर्गोस का प्रयोग किया जा रहा है। अनुप्रयोगों में सुधार के लिए EOS-06 अतिरिक्त डेटा सेट प्रदान करेगा, जैसे समुद्री सतह तापमान, पुष्पन के लिए ऑप्टिकल क्षेत्र में और वातावरण के लिए इंफ्रारेड क्षेत्र में ज्यादा संख्या में बैंड्स उपलब्ध कराएंगे। इससे संबंधित एल्गोरिथम्स को डेटा सेट्स की मदद से उन्नत अनुप्रयोग क्षेत्र में विकास लाएगा और मिशन की उपयोगिता में वृद्धि होगी। Plus 13 minutes. Among the passenger payloads, there is 2 numbers of Thybolt satellites. It is a 0.5U spacecraft bus that includes a communication payload to enable rapid technology demonstration and constellation development for multiple users. It also demonstrates store and forward functionality for authorized users in the amateur frequency band. The satellite shall be deployed by using Dhruva Space orbital deployer 4 stage to performance perform the normal. specific mission operations for a minimum lifetime of 1 year. चतुर्थ चरण सामान्य प्रदर्शन करते हुए अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर अब हम उड़ान से 835 सेकंड्स की दूरी पर आ चुके हैं। Plus 14 minutes. वर्तमान में त्रिवेंद्रम स्थित ट्रैकिंग सेंटर हमें ये डेटा उपलब्ध करा रहे हैं। PSLV भारत के प्रमोचक रॉकेट की श्रेणी में तृतीय पीढ़ी का रॉकेट है। अक्टूबर 1994 में PSLV की प्रथम सफल उड़ान के बाद PSLV एक विश्वसनीय तथा बहुमुखी उपग्रह प्रमोचक रॉकेट के रूप में उभरा है। अब तक PSLV की 55 उड़ानें हो चुकी हैं और वर्तमान प्रमोचन 56वां है। PSLV विभिन्न उपग्रहों के प्रमोचन में सक्षम तो है ही, इसके लिए वह मल्टी पेलोड
एडेप्टर का प्रयोग करता है, न सिर्फ विभिन्न नेतभार बल्कि विभिन्न कक्षाओं पर भी उपग्रहों को स्थापित करने में PSLV सक्षम है। इस प्रमोशन मिशन में भी ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स के प्रयोग कर ऑर्बिट 1 जो कि 740 किलोमीटर का ऊपरी ऑर्बिट है से ऑर्बिट 2 में प्रवेश कर सहयात्री उपग्रहों को अंतःक्षेपित किया जाएगा। We are 15 minutes, 15 seconds past the launch time. Current altitude is 739 kilometers and the relative velocity of 7.2 kilometers per second. इस समय PS4 प्रज्वलित है और सामान्य निष्पादन कर रहा है। इस दौरान वह कुल 15.2 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इसमें ईंधन के रूप में मोनोमेथाइल हाइड्रोजीन तथा ऑक्सीकारक मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यूज किया जा रहा है। Close to 480 seconds of burn time of PS4 results in the rocket attaining 742 kilometers altitude. Stage thrust cutoff. चतुर्थ चरण को कट ऑफ कर दिया गया है। इसका प्रज्वलन काल समाप्त हो गया है। अब कुछ ही क्षणों में कक्षीय स्थितियां प्राप्त कर मुख्य उपग्रह EOS-06 का अंतःक्षेपण किया जाएगा। When the correct attitude also is attained, the primary satellite EOS-06 will be injected. EOS-06 को 742 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में 98.34 डिग्री के झुकाव के साथ 7.57 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति से अंतःक्षेपित किया जाएगा। EOS-06 satellite separated. EOS-06 को सफलतापूर्वक अंतःक्षेपित कर दिया गया है। We have had a successful launch and injection of primary satellite EOS-06. This range operation director. Mission is continuing with two phases of orbit changing thruster, that is OCT firing. The first phase of OCT burns takes place in the non-visibility period. The second phase of OCT burns takes place partially in the visibility period of Lucknow in orbit 2. After these two phases of OCT burning, remaining 8 satellites will be separated in the visibility period. During the non-visibility period, ground trace will be updated by extrapolation on the video wall. All stations involved in operation shall continue. पश्चात PSLV-C54 के सभी चरणों ने सामान्य निष्पादन किया तथा मुख्य उपग्रह EOS-06 को उनकी उद्देश्य कक्षा जो कि 742 किलोमीटर की है उसमें स्थापित किया। उसके बाद OCT ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स की मदद से ऑर्बिट 1 से ऑर्बिट 2 की यात्रा की गई है। ऑर्बिट 2 जो कि करीब 515 किलोमीटर की निम्न कक्षा है, इसे प्राप्त करने के लिए ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स को दूसरी बार शुरू किया गया है। और अभी OCT थ्रस्टर्स प्रज्वलित हैं। कुछ ही क्षणों में 515 किलोमीटर की कक्षा प्राप्त कर ली जाएगी तथा अन्य सहयात्री नितभारों को उनकी उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपित किया जाएगा। इसमें क्रमशः थाईवोल्ट के 2 उपग्रह, फिर एस्ट्रोकास्ट 1, 2, 3, 4 और आनंद, और फिर अंत में इंडिया भूटान सेट INS-2B का उद्दिष्ट कक्षा में अंतःक्षेपण किया जाएगा। वर्तमान में हमें भू स्थित स्टेशंस स्वालबर्ड, लखनऊ, त्रिवेंद्रम, मॉरिशस और अंटार्कटिका स्थित ट्रैकिंग एंड टेलीमेट्री स्टेशन से यान के आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं और इससे पुष्टि हुई है कि OCT थ्रस्टर्स चालू हैं और अपने गंतव्य की ओर हैं। Welcome back to the live telecast of PSLV-C54 EOS-06 mission. I am Madhuri
along with my co-commentator Shri Vikas Swarnkar from the Mission Control Center here at Satish Dhawan Space Center. The rocket has had a successful liftoff at 11:56 hours today, the 26th of November 2022. All the 4 stages of the launch vehicle had performed according to prediction, and EOS-06, weighing 1,115 kg, was injected at 742 kilometers altitude with a velocity of 7.57 meters per second, which occurred at 12:13 IST. Subsequently, the orbit has to be changed by 2 burns of orbit change thrusters. The rocket had crossed the range of tracking station at Antarctica. During the OCT burn 2 regime, Svalbard station will start to acquire signal, while the rocket, or more appropriately, the 4th stage, is in the 2nd orbit, having an altitude of 515 kilometers. The separation events of the 8 passenger payloads will be viewed by Svalbard, Lucknow, Trivandrum, Mauritius and Antarctica ground stations. Change of perigee and apogee is confirmed. अब इसकी पुष्टि कर दी गई है। ओसीटी ऑर्बिट चेंज थ्रस्टर्स का द्वितीय चरण समाप्त हो चुका है। वर्तमान में एल्टीट्यूड 512 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 7.68 किलोमीटर प्रति सेकंड। कुछ ही क्षणों में थाईबोल्ट के 2 उपग्रहों को अंतक्षेपित किया जाएगा। Next up is the separation event of the 2 satellites Thybolt 1 and 2. The stage reorienting itself for the correct attitude for the separation event. Thybolt satellites are separated. थाईबोल्ट 1 और 2 को सेपरेट कर दिया गया है और एस्ट्रोकास्ट 1 को भी पृथक कर उनके उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। The 2 Thybolt satellites have been separated, and also the first Astrocast satellite has been separated. इस घटनाक्रम में अगला एस्ट्रोकास्ट 2 उपग्रह इसे अंतक्षेपित किया जाना है। Astrocast, a 3U spacecraft, is a technology demonstrator satellite for the Internet of Things as the payload. There are 4 numbers of Astrocast. Satellites separated. Now we have the confirmation of the separation of the 2nd Astrocast satellite. एस्ट्रोकास्ट 2 को भी सफलतापूर्वक अंतक्षेपित किया जा चुका है। Astrocast 3 satellites separated. अभी रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने कंफर्म किया एस्ट्रोकास्ट 3 भी अपनी उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित। इस क्रम में अगली घटना होगी एस्ट्रोकास्ट 4 का अंतक्षेपण। The Astrocast 3 satellite has also been separated. Current altitude 515.4 kilometers.
The next flight event is the separation of Astrocast 4. Two more satellites, Anand and the India-Bhutan joint venture, INS-2B, will get separated after interval of 10 seconds and 60 seconds respectively. In the duration between the separation of Astrocast 3 and 4, the vehicle travels a ground trace of 3,270 kilometers approximately. The rocket then reorients itself for the separation. The orbit destination is 527.8 kilometers. In the meantime, Mauritius tracking station is acquiring the trajectory data. At the time determined for the separation of next 3 satellites, Antarctica ground station will be tracking. आइए आपको तब तक एस्ट्रोकास्ट के बारे में कुछ बताते हैं। एस्ट्रोकास्ट एक 3 यूज साइज का उपग्रह है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT की तकनीकी प्रदर्शन निभार रखे हुए है। इस मिशन में कुल 4 एस्ट्रोकास्ट सैटेलाइट भेजे जा रहे हैं। इसमें 4 उपग्रहों का प्रमोशन के पश्चात एस्ट्रोकास्ट के नक्षत्र में कुल 16 उपग्रह हो जाएंगे, जिसे दुनिया के दूरवर्ती इलाकों में परिसंपत्तियों की ट्रैकिंग तथा मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। एस्ट्रोकास्ट उपग्रहों का सूर्य तुल्यकाली यानी सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में PSLV-C54 द्वारा स्थापित किया जा रहा है और यह एस्ट्रोकास्ट की पहली उड़ान नहीं है। इससे पहले भी PSLV-C45 द्वारा एस्ट्रोकास्ट उपग्रह भेजा जा चुका है। For the recapitulation of viewers, let me mention that the 4 passenger payloads of Astrocast taking ride in PSLV-C54 EOS-06 mission are through spaceflight in USA and NSIL. So far, Indian rockets have carried 381 satellites belonging to 34 countries. Today's launch will take the count to 385. इसरो भूटान सैटेलाइट INS-2B भूटान के लिए बनाया गया। यह इसरो का INS-2B बस में कॉन्फ़िगर किया गया है। इसमें 2 नितभार हैं, नैनो MX और APRS डिजिपीटर। इसमें नैनो MX एक बहु स्पेक्ट्रमी ऑप्टिकल प्रतिबिंबन वाला नितभार है जिसे स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने बनाया है। APRS डिजिपीटर को DITT भूटान और URO स्पेस सेंटर बैंगलोर द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया है। भारत और भूटान दक्षिण एशिया उपग्रह SAS के लिए ग्राउंड अर्थ स्टेशन के साथ अंतरिक्ष सहयोग में साथ आए हैं, जिसका उद्घाटन अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा थिम्पू यात्रा के दौरान भूटान में किया गया था। INS-2B इसी के फलस्वरूप भारत और भूटान के सामाजिक आर्थिक सहयोग की ओर एक और नया कदम है। INS-2D का प्रमोशन PSLV-C52 मिशन द्वारा हम देख रहे हैं और कुछ ही क्षणों में इसे अंतक्षेपित किया जाएगा। The Anand, one of the payloads, which is from Pixxel India, is a 16 kilograms weighing satellite. It is a nano satellite and a technology demonstrator to demonstrate the capabilities and commercial applications of miniaturized Earth observation camera for Earth observation using a microsatellite in low Earth orbit. This is a 3-axis stabilized satellite consisting of a SAT bus accommodating all subsystems like telemetry, telecommand, electrical power systems, attitude determination and control system ADCS, onboard computers, etc. and a payload unit.
Coming to the India-Bhutan satellite, it's an ISRO nano satellite 2 for Bhutan, INS-2B. Spacecraft is configured with INS-2 bus. INS-2B will have two payloads, namely NanoMX and APRS Digipeater. NanoMX is a multispectral optical imaging payload developed by Space Applications Center. APRS Digipeater payload is jointly developed by DITT Bhutan and URSA. अब तक हम देख चुके हैं ऑर्बिट कंट्रोल थ्रस्टर्स की मदद से द्वितीय ऑर्बिट 2 में हम प्रवेश कर चुके हैं और थाईबोल्ट नामक दो उपग्रहों का प्रमोचन हो चुका है। एस्ट्रोकास्ट 1, 2 और 3 भी प्रमोचित किए जा चुके हैं। अब हम इस घटनाक्रम में अगला देखेंगे एस्ट्रोकास्ट 4 का पृथकीकरण। As we await the separation of Astrocast 4, let me tell the viewers a little more about the India and Bhutan space cooperation, which dates back to May 2017, when the launch of South Asia satellite took place. The South Asia satellite was launched by India as a gift to the countries in the South Asia region, including Bhutan, catering to a host of space applications. A precursor to INS-2B is a technology demonstrator satellite called INS-2TD that was launched by PSLV-C54 on 14th of February 2022. While INS-2D had carried thermal imaging cameras, the present satellite INS-2B is carrying a multispectral optical imaging payload. आनंद एक नैनोसेट है जो तकनीक प्रदर्शन उपग्रह है। इसे निम्न कक्षा में माइक्रो सैटेलाइट की मदद से भूप्रेक्षण के लिए मिनिचराइज्ड कैमरा की क्षमताओं तथा वाणिज्यिक अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करने के लिए किया जा रहा है। यह उपग्रह त्रिअक्षीय स्थिर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। यह टेलीमेट्री, टेलीकमांड, विद्युत तंत्र और अभी इसकी पुष्टि हुई। एस्ट्रोकास्ट 4 अंतक्षेपित कर दिया गया है। आनंद उपग्रह को भी अंतक्षेपित कर दिया गया है। Meanwhile, two separation events have taken place in quick succession: the separation of Astrocast 4 and Anand satellite. मिशन पूर्णतः पूर्व निर्धारित तरीके से आगे बढ़ता हुआ। इस कड़ी में अंतिम INS-2B का अंतक्षेपण किया जाएगा। INS-2B को 528 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 7.67 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति के साथ अंतक्षेपित किया जाएगा। India-Bhutan satellite separated. INS-2B satellite has been separated. All 9 satellites are separated. Mission accomplished. Handing over to mission director. PSLV-C54 has injected EOS-06